is thermal effects. The general circulation of winds of the globe is suppressed in these areas. And this intense cooling and extreme heating of this large landmass has the effect of producing a great anticyclone in summers, in winters, which is like the land which is getting in the winters, the land is cool. So you see this high pressure here, and the low pressure is situated in the what we call this centered in Mongolia, and depression in summers centered over Himalayas. So these two great pressure systems dominate the whole Asian region. In these two, what we call the northeast monsoon of China and Indian Ocean and southwest monsoon of the Indian Ocean. If you see this northeast monsoons of China Ocean, during northern winter, the Asian continent is cooled. Winter may, of course, the land is absolutely extremely cold, and an intense high pressure area forms over eastern Siberia. So ये जो पूरा का पूरा land area है, you have seen this near Asian continent, that near Siberia, you find that the maximum, the lowest temperature goes. So there you have this high pressure area situated in the Mongolia area over, and the wind circulating around this form the northeast monsoon. In the northern part of the China Sea, the pressure gradient is large. Winds likely 6 to 7. Why? Because high pressure and low pressure, when the pressure gradient is existing, so winds will definitely start blowing from high pressure to low pressure. And this northeast monsoon, what we call, it is again causing a good concern, and winds, of course, in this northeast monsoons are again as compared to southwest थोड़ा ज़्यादा है. Why? Because the wind direction plus the trade winds दोनों की direction same है, so they gets really modified or really amplified rather, that these northeast winds blow with a very more strength. So Bengal and Arabian Sea winds are northeasterly force 3 to 4, whereas rainfall of the showery type is likely on the windward coast of China, and northeast monsoon becomes established in early December and continues until April. So this is due to the change in the sun, change in the heating pattern. So this is the pattern during your northeast monsoon, that you have a high pressure situated here, and definitely with the high pressure as compared to this area, there is a low pressure. Here you see 1036, and here again you have this low pressure. The wind starts blowing from high towards this low pressure of 1012. So you see this northeast, and again accompanied by the same pattern of the trades also. So they also bring a lot of rain over Bay of Bengal, Arabian Sea not much, but Bay of Bengal, South China Sea. Now if you are passing these areas, so the weather is quite bad and you see a lot of typhoons taking place even during this change of monsoon when you face this, especially when you are going towards Japan. So you are heading basically in the northeast direction, and you straightway get winds, swell, everything right ahead. So the ship speed gets definitely very severely affected by the effect of this northeast monsoon. And of course, coming down, when you are coming from Japan towards Arabian or towards Indian Peninsula, so there you find the winds are helpful, little bit from astern, and they do not create as much trouble as much while going towards Japan. The weather is very, very rough and the ships hardly move. So of course, as I told you today, you have better equipped, but otherwise even position fixing to know the position used to be a difficult job in the South China Sea during this monsoon, because overcast rain, heavy rain and overcast. So when we are dependent on the position by the what we call the stellar body, sun, moon, nothing is available. So difficult for the position fixing also used to be there. Now southwest monsoon, on the comparison, on the other hand, if you see, this is just the opposite, that during the northern summer, this Asia continent is warmed and the high pressure over Siberia declines and is replaced by low pressure over northwest India. Now there is a pressure gradient between the high pressure and South Indian Ocean. That's what we have seen.
यहाँ पे तो 996 है, there you have 1016, 1018. So there is a very steep pressure gradient between these two high and low pressures. So this causes this southeast trade to blow up to equator, and crossing the equator, the wind near African coast circulates around the low over Africa and brings rainfall to East Africa. Away from this coast, if you see this African coast, the wind is deflected to the right and blows from southwesterly direction. And in the Arabian Sea, the wind is southwest, force 7 to 8. And you know that monsoons, all the west coast of India, of course, the sea swell, very heavy winds, rain. So it is quite difficult, quite tough to come into the Indian ports. So a lot of delay also is there. Why? Because heavy rain, ships cannot work cargo. So a lot of waiting. So where you are going to wait? In the again outside open areas. So it is a quite a troublesome time. In Bay of Bengal, southwest monsoons of force 6, 7 can be expected. And while in the southern parts of China Sea, of course, by the time these winds reach China Sea, the force reduces to 4 to 5. But on the west coast of India, the first impact of the southwestern sea quite severe. Lot of rain, flooding takes place. The northern part of China Sea has light southeasterly winds, because by the time these winds die down, up to reaching into your Luzon Strait and all that. Now, the air forming the southwest monsoon has traveled 1,000 miles of ocean. So naturally, when it is coming from ocean, means it is saturated, lot of water vapor, and this results in heavy rain, especially near the coast. Definitely poor visibility, and it is now southwest monsoon during June until beginning of October. So these are the few dates, and of course meteorologists, they can exactly predict, they have the radars, they can see. So normally 1st June or 3rd June is going to hit the Kerala coast. So these dates, you see how precise these things are, but weather is changing. Sometime monsoon is delayed, sometime it is little earlier. So ये तो हमने देख लिया साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट आपकी monsoons, how they actually form and what all they create. So थोड़े से notes हैं, इसको अगर आप पढ़ लीजिए, so I think you can very easily answer. And orals में भी अगर पूछे, yes, so I think you should be able to answer what is this monsoons regime and how this monsoon winds take place and how it is different from the trade winds because of the huge land masses. Now next is your land and sea breezes. Now land and sea breeze also, you may be, I don't know if you have noticed, so when you are sometime anchored near the coastal areas, so there you feel, even very common in Bombay, that this land and sea breeze effect is very much prominent. So the regular alteration of land and sea breeze is a well-known feature of most tropical and subtropical coasts and large islands. So land and sea breeze hai kya? This occurs at time in temperate latitudes and fine weather in summer. Though they are much weaker and less marked as compared to case of lower latitudes. Now cause of these breezes, again unequal heating, solar, basically the solar energy. So now land and sea gets heated up unevenly, and by day the surface of land rapidly acquires heat from the sun, whereas the sea temperature remains virtually unaffected. So देखिए, every time same thing is prevailing. So it is already the effect of your solar energy, sun's radiation, which is creating all these effects. So even in the land and sea also, if you have seen, by day the surface of land, it starts getting the heat, starts getting heated up, and the air in contact will start rising, starts becoming cooler, and then low pressure getting created. So whereas the sea temperature is almost virtually unaffected. Why? Because there the heat, the whole mass of the water has to be heated due to the convection currents. So this के साथ, if you see, as the land is heated during the daytime, the air over it will be heated by conduction, and this heating causes a decrease in density of air and the pressure falls. So low pressure will be created. Now imagine a coastal area where you have this land and you have the sea close by. So if there is a low pressure during the daytime, so
So what will happen? Gradient, pressure gradient exists. So the sea temperature remains more or less the same. The pressure is high as compared to the low pressure in the land. So naturally winds from sea starts blowing towards the land. So this pressure gradient is sufficient for air to flow from over to sea to the land. So this is called the sea breeze because it starts blowing from the sea towards the land. So normally you can see when the land is getting heated up right from the morning up to noon time or little bit after up to 2 o'clock, the land is getting warmed up by the sun's incoming radiation. So there will be a low pressure and you see this sea breeze blowing it's not that strong, but of course it blows near the coastal areas. Now the opposite happens after the sun sets. Now जैसे sunset हो जाएगा, what will happen? The land starts getting cooled. अब land starts getting cooled, अब sea temperature तो वहीं पे है, वहाँ पे तो इतनी pressure changes हुई नहीं, and the air above also starts getting cooled, and जैसे air starts getting cooled, so it starts sinking and the high pressure is created. Now in the evenings, if you see past noon, you start seeing that there is a high pressure created on the land areas, whereas the sea as comparison, the pressure over the sea is now low compared to that over the land. So you will find this pressure gradient and the wind starts blowing from land towards the sea. So this land breeze, generally very light compared to sea breeze, sets in shortly after sunset and continues until dawn. So this is how basically your land and sea breeze affect the whole areas, especially the coastal areas. Now the sea breeze is usually setting late in the forenoon. That's when the sun has risen and starts heating up the land and reach maximum strength about force. Occasionally they reach 5 or 6 around 1400. So that is the maximum time when the sun is it's heating the land to the maximum. So maximum low pressure will be around 1400 hours, and sometimes the sea breeze is of course quite strong for small ships, small fishing boats and all that. So land breezes are usually less marked and weaker than sea breezes. So sets in shortly after sunset and continues until the dawn. So this is what you have to be careful. Sometimes you are anchored near the coastal areas. It's not only in India, so anywhere where this land and sea breeze affects certain areas, this effect is quite pronounced, and sometimes the ships start dragging anchor without realizing the wind force is picked up 5 to 6. So effect of these breezes may be to deviate the prevailing wind, reinforce, neutralize, or even reverse it. So this is basically your land and sea breeze, how they form. Now what are the factors? ठीक है, हमने ये तो समझा दिया अपने आंसर में कि लैंड एंड सी ब्रीज हाउ दे फॉर्म ड्यू टू unequal heating of the land and sea masses, or the land mass and the sea surface. अब इनके और क्या क्या फैक्टर्स हैं which are responsible for creating these breezes? First, a dry desert coast as opposed to the forest or swamps. High ground near the coast. So coastal areas में if you have a high ground, weak prevailing wind and clear or partly cloudy sky. So if you have all these conditions, then you see this land and sea breeze effect is very much pronounced. Cold current along the coast also has the effect. Now currents आपने पढ़े नहीं, but currents they do affect the climate of the coast. So when you study these currents also, you see how the climate of the coast changes according to the current which is flowing against the coast. So cold current in the coast also has the effect favoring the establishment of well-marked sea breezes. So small islands less than 5 to 10 miles in diameter will not usually produce this land and sea breezes. So naturally you need a coastline, little bit higher up coastline, where this pressure distribution और लो प्रेशर हाई प्रेशर सेट्स इन. इसी के साथ आ जाता है आपका कैटाबैटिक एंड एनाबैटिक विंड. सो कैटाबैटिक एनाबैटिक विंड्स, ये भी अगर आप देखिए पैटर्न इनका भी ऑलमोस्ट सेम है. सो इट इज़ अगेन ऑन टू द टोपोग्राफी, और आपकी लैंड की जो जोग्राफी है उस पर भी डिपेंड करते हैं. सो ऑन क्लियर नाइट्स द लैंड सरफेस गिव्स ऑफ हीट इनटू स्पेस वेरी क्विकली, resulting again in the cold layer of air near the land surface.
Now if the ground is sloping, again mountainous, lot of areas are there where there are huge mountains near the coast. Now if the ground is sloping, the cold air at the land surface will be colder than the adjacent air over the sea. तो इसका effect क्या होगा? The air near the land surface being denser will start sliding down this hill due to the gravitational force. And this force, and this is the wind what we call the katabatic. Kata means down. So this down sliding wind from the mountain side due to the pressure difference, it starts coming towards the sea area and we call it katabatic. If the mountain is high, slope is steep, these winds can reach sea level with a wind force as much as Beaufort scale 7 in a very short time. So इसके लिए अगर there are a lot of areas where these high mountains are there and suddenly you find the wind picks up without any warning. So this is nothing, it is just the katabatic wind due to the sliding effect of this wind from the mountain comes down to the sea area. And because of their sudden onset, great force, they are of course dangerous to small crafts, vessels at anchor. If you suddenly get a wind force of 6, 7 without any warning, without seeing any pressure change, so definitely these winds can damage these small ships or small crafts. Now, the onset of this katabatic cannot be predicted as they have no relationship with isobars. That's why these winds are, again, you have no idea and suddenly they set in. So they are caused due to gravitational force and not by pressure gradient, because these winds are just sliding down the mountain. Anabatic, just opposite, up. So during daytime, land surface gets heated up, resulting in layer of warm air next to the land and inside a valley, and the air near the land surface is really warmer than the air above it. So if you just compare a mountain that down below is a valley and the upper surface high mountain, the relative colder air thereby displaces the warmer air out of the valley, sliding it up gently up the mountain side. So now here opposite happens, the wind starts sliding up. So this wind is called anabatic wind because top air is cooled and down below the air is relatively warm, and this warmer air starts going up. So these winds are much weaker as compared to than katabatic winds, having not much importance to mariners as they occur usually in the valleys. So katabatic जो है वो हमारे लिए थोड़ी सी important हो जाती है, that suddenly it comes down sliding and can create a havoc. ठीक है, तो ये तो आपकी various winds, various type of climatology, rest, sea, swell, waves, I think we have covered. So you all are familiar with those terms, that what is sea, what is swell, and this much wind pattern अगर आप समझ लेते हो तो I think it is enough. इन्हीं में से इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा. सो मॉनसून का क्वेश्चन कॉमन रहता है, एंड आपका what you call land and sea breezes. So this is very helpful even if you see, if you are aware that when you are keeping a watch or coasting time में, so you can see this effect very much pronounced and you can see how the winds are forming. चलो ये तो था आपका winds का. Any questions, anything from your side? No, sir. No. Yeah, I hope थोड़ा बहुत, I know little bit boring for you, but जैसे जैसे आपका interest बनेगा, so if you can understand these winds, तो पेपर में भी आंसर करना आसान हो जाता है. इन फ्यूचर में इन्हीं winds के साथ when you go for the phase 1 चीफ ऑफिसर्स के लिए, वहाँ पे भी हाउ दी स्टॉर्म्स फॉर्मेशन. तो ये आपके बेसिक्स हैं. तो अगर आपने ये बेसिक समझ लिया कि यस, वेरी बेसिक इज हाउ द विंड स्टार्ट्स राइजिंग ड्यू टू द टेम्परेचर, लैंड गेटिंग वार्म्ड अप, and these are the basic things which give rise to your storms, how the storms, bad weather, depressions start occurring, and even the flow of these winds from high pressure to low pressure in different oceans, different areas, how it is getting affected. So इसके साथ ही है कि yes, जब आप अपना पैसेज प्लान बनाते हो, so that time also it becomes useful because weather
हम से चाहे वेदर रूटिंग कर लें चाहे कुछ भी है, सो वी ऑलवेज सी दैट विच ऑल एरियाज विच मंथ, एंड इसके लिए बेस्ट इंफॉर्मेशन आपके पास रूटिंग चार्ट्स, isn't it? So routing charts, I don't know, I think most of you must have seen. Anybody who has not seen routing charts on the ship? आजकल एग डिस्क है, सारा कुछ एग डिस्क पे ही है, बट आई होप यू हैव सीन द रूटिंग चार्ट्स. यस सर. कुछ आइडिया क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है उस पर? देखो अभी हमने पढ़ा था दैट विंड रोज एंड ऑल दैट. विंड रोजेस होते हैं उसमें, और करंट्स होती हैं, और मतलब बस ट्रैफिक का भी होता है सर. ट्रैफिक सर, फिशिंग बोट कहाँ पे ज्यादा है कहाँ पे कम. हाँ, रूटिंग चार्ट पे वो नहीं दिखाते, फिशिंग ट्रैफिक नहीं दिखाते हैं. फिशिंग ट्रैफिक पूरे वर्ल्ड का है सारे. वर्ल्ड का और मैप है. या फिशिंग ट्रैफिक के लिए अगेन इफ यू सी दिस व्हाट यू कॉल दिस करंट्स, जब आप करंट्स पढ़ोगे तब आपको पता लग जाएगा कि फिशिंग कहाँ पे होगी, जहाँ पे फिश को खाने को मिलेगा. Isn't it? There is something called upwelling currents. या कोस्टल एरियाज में अपवेलिंग करंट्स होते हैं. सो अपवेलिंग करंट्स हैं कि सी नीचे से जो पानी है दैट कम्स ऑन द सरफेस, बिकॉज इफ द विंड इज ब्लोइंग अवे फ्रॉम द लैंड सो इट टेक्स द वाटर अवे फ्रॉम द लैंड. अब वो जो पानी उसने अवे किया उसको फिलअप करने के लिए नीचे से पानी ऊपर आता है, एंड ये जो पानी नीचे से इसे कहते हैं अपवेलिंग करंट्स. तो ये जो करंट्स हैं ये नीचे से न्यूट्रिएंट्स को, लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स अपने साथ लेके आता है फ्रॉम 100-150 मीटर से. ये सर्कुलेशन दिस इज अगेन कॉल्ड द नियर द कोस्टल एरियाज. नेचर की कैसी गिफ्ट है. तो यहाँ पे जहाँ पे भी ये चीज़ फिर नीचे से ऊपर आ रही है, दिस न्यूट्रिएंट्स खाने का मटेरियल, तो वहाँ पे नेचुरली फिश आई. तो ये भी एक बड़ी स्टडी है. फिशरीज डिपार्टमेंट दे डू लॉट ऑफ स्टडीज़ कि कहाँ पे फिश है, कहाँ पे उसको खाने का मिल रहा है, कहाँ पे है. बेसिकली विद द करंट्स यू कम टू नो, एंड देयर यू फाइंड लॉट ऑफ फिश. स्पेशली आपने देखा इवन इन द साउथ चाइना सी, ताइवान साइड, इवन इंडिया की अपनी कोस्ट ही देखिए. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर कम टू द इंडियन कोस्ट. सो स्पेशली नॉट मानसून का एक फ़ायदा है कि मानसून टाइम में ऑफ कोर्स द फिशिंग इज स्टॉप बिकॉज ऑफ द रफ सी, बट अदरवाइज व्हेन द सी इज काम, आई मीन आफ्टर द मानसून यू सी there is so much of fishing off the Indian coast, right from Indian up to even Karachi and all. So it is difficult to navigate, and you will see that you don't find even the passage. दिखता ही नहीं रास्ता कहाँ जाएंगे. पूरा horizon looks well lit with these fishing boats. तो ये बच्चे आपको रूटिंग में नहीं मिलेगा. यस सर. बेसिकली आपको वेदर में मिल जाता है कि किस टाइप का वेदर है, एंड इट इज़ रियली डिफिकल्ट इफ यू आस्क मी दैट व्हेन यू एक बार मॉनसून के बारे में बता दीजिए सर. मॉनसून के बारे में जी एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए. या मॉनसून का तो सिंपल था कि अगर आप साउथ वेस्ट को ही समझें, साउथ वेस्ट का अगर मैं आपको ये इफ यू सी दिस मैप, मॉनसून का जो आइसोबैरिक पैटर्न अगर आप देखें, this is very simple. In the summer the land gets heated up, and ये जो हमारा एशियन कॉन्टिनेंट है, तो यहाँ पे of course the northwest part, the northwest India, so here basically it becomes a center of low pressure. Now this low pressure is quite low. Why it is created? Why it is getting created? Because of the heating. The land gets heated up during the summer, and you know तभी कहते हैं ना कि जितना अभी तो मानसून के लिए, मानसून तभी आएगी जब तक गर्मी पूरी नहीं पड़ेगी. कहते हैं ना देसी भाषा में, यार अभी तो गर्मी पड़ी नहीं. तो जैसे जैसे देखिए गर्मी पड़ती जाएगी 48, 49, 50 डिग्री, स्पेशली राजस्थान बेल्ट एंड ऑल दैट यू सी, चुरू जहाँ पे इनका डेजर्ट एरियाज हैं, द टेम्परेचर गोज इवन +50. तो इसकी हीटिंग के साथ ये लैंड गेट्स हीटेड अप. सो नेचुरली द एयर विच इज़ इन कॉन्टैक्ट विद दिस लैंड, उसको क्या होगा, स्टार्ट्स राइजिंग. तो जैसे वो स्टार्ट राइज करना शुरू करेगी तो नीचे क्या हो जाएगा, एक किस्म का वैक्यूम क्रिएट हुआ. सो लो प्रेशर इज गेटिंग क्रिएटेड ड्यू टू द हीटिंग ऑफ द लैंड मास. तो अब ये जो लो प्रेशर यहाँ पे सिचुएटेड है, अब इसके अगेंस्ट आप देखिए बाकी एरिया में द प्रेशर सिस्टम ड्यूरिंग दिस मंथ्स
The pressure isobars are shown here, 1008, 1012, 1006 and 1016, 1020. So यहाँ पे high pressure area. So there is a tendency, again what we call in meteorology के में हम क्या कहते हैं, pressure gradient, isn't it? So there is a pressure gradient between high pressure and low pressure. यहाँ 996 है, यहाँ पे 1020, 1024. So there is a tendency for these winds. अब इस area में if you see south of equator, what winds are prevailing? Southeast trade winds. तो ट्रेड विंड्स की डायरेक्शन क्या है? दे आर कमिंग फ्रॉम साउथ ईस्ट. तो ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स जो हैं फुल होल मास दे स्टार्ट्स ब्लोइंग टुवर्ड्स द लो प्रेशर बिकॉज दे विल अगेन नेचुरल टेंडेंसी है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जस्ट टू फिल अप दिस. तो ये विंड्स जो हैं दे स्टार्ट ब्लोइंग टुवर्ड्स दिस लो प्रेशर. एंड सिमिलरली इसके साथ ही अगर आप देखिए अफ्रीका कॉन्टिनेंट, वहाँ पे भी यही चीज़ है. सो अफ्रीका में भी ऑल्सो वी हैव अ डेजर्ट, वहाँ पे भी लैंड गेट्स हीटेड इक्वली हीटेड अप लाइक इंडिया. वहाँ पे भी लो प्रेशर क्रिएट होता है. सो अगेन दीज विंड्स दे गो टुवर्ड्स दिस फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. तो यहाँ पे तो ये सीधी चली जाएंगी, बट जैसे ये विंड इक्वेटर क्रॉस करेंगे, दिस इज इक्वेटर, तो इक्वेटर क्रॉस करने पे इनकी डायरेक्शन जो है चेंज होनी शुरू हो जाती है. क्यों? अब कैरोलिस फोर्स भी आनी शुरू होगी, इजंट इट? सो कैरोलिस फोर्स भी इसको डाइवर्ट करना शुरू करती है. सो इक्वेटर से जैसे इसने साउथ ईस्ट ने क्रॉस किया, so ये it starts becoming southerly and then slowly to southwesterly. so यहाँ तक इंडिया तक पहुँचते, this is again I think about 8-9 degrees latitude पे अब these winds reach. so and high to low pressure plus ये winds आ कहाँ से रही हैं? over the ocean, fully saturated with water vapor. लैंड में ड्राई एयर है, यहाँ पे तो ड्राई एयर थी समर्स में, यहाँ पे जो ड्राई एयर थी उसमें तो वाटर वेपर कम है. But this wind is coming from over the ocean. It is traveling over the ocean and it is carrying lot of water vapor. And यहाँ पे जब कोस्ट पे आएगी, you have the mountains. It starts rising. So it starts rising. So again we have seen how the rainfall takes place, cloud formation, and then these saturated हैं, water vapor तो बहुत ज़्यादा है इनमें. So जैसे this wind starts rising, it starts getting cooled below the dew point. So heavy rain. So rain भी है plus wind force भी है. Why? Because there is a steep water, this pressure gradient is existing. So इनकी जो force है, now you can see this Arabian Sea. This is the Arabian Sea part of the, ये आपकी Indian coast दिख रही है. So Arabian Sea or even Bay of Bengal, they will disturb the sea also. Because जैसे ही wind force pick up की 7, 8, 9 force हुई, तो it will disturb, it will create big waves. So that's why this area during the southwest monsoons becomes dangerous. तो इसके लिए again ships तो चलते ही हैं. I've been coming, we have come many times in monsoon में हम आते थे. And imagine if you are coming from Japan side, तो आपका course भी जो है वो इस coast के parallel ही है. It's almost 90 degree to the wind and the swell. तो यहाँ पे थोड़ी सी आपको dog like sailing करनी पड़ती है. You can't come straight, so sometimes you go away, then come like this, then go away, then come like this. So you have to avoid, because ships अगर 90 डिग्री पे आपका swell आ गया, beam swell आ गया, तो excessive rolling होगी. So this is how this monsoon is basically created. So normally you see this direction is south or south to southwest, ये direction आपकी आ जाती है, and they create heavy rain not only in the coast, over entire area. तो आप भी खुश हो जाते हो, नहीं बारिश आ गई. अगर बारिश आए ज़्यादा है तब भी प्रॉब्लम. अब तो ज़्यादा में, सो वी आर ऑल, आई थिंक आप भी प्रिपेयर कर रहे होंगे अपनी गाड़ी वाड़ी सब, नो? फ्लडिंग टेक्स प्लेस, सो लॉट ऑफ व्हीकल्स गेट डैमेज. तो मानसून अच्छी भी है, चाहिए भी है क्रॉप्स के लिए, पानी के लिए, एंड एट द सेम टाइम अब आवर सिटीज़ आर बेसिकली फुल कंस्ट्रक्शन, चारों तरफ कंस्ट्रक्शन है, नो ड्रेनेज, फ्लडिंग अभी शुरू हो गया. नहीं, लॉट ऑफ टाइम दे शो, देखो जी घर में पानी चला गया. बॉम्बे वेरी कॉमन. बॉम्बे में अगर फ्लडिंग क्यों होती है? हैवी रेन, रिवर नहीं है सर, है रिवर नहीं है वहाँ पे ना. और कुछ एनी अदर? ये तो कोस्ट के साथ है, इसमें तो एकदम पानी समुद्र में चला जाना चाहिए, रिवर चाहिए ही नहीं. नो, यस सर. छोटी छोटी चीज़ें हैं देखो.
अभी क्या है कि बॉम्बे में फ्लडिंग तब होगी अगर बाहर आपका नाउ इमेजिन हो, आई थिंक चाहे आप बॉम्बे, आई थिंक ऐसा कोई सी फेयर नहीं होगा जिसने बॉम्बे देखा ना हो। ना बाहर अगर हाई टाइड है ना, बॉम्बे जो भी सी कोस्ट है वहाँ पे टाइड तो रहेगा, हाई वाटर लो वाटर, इजंट इट? यस कभी आपने चार्ट वर्क में पढ़ते भी होंगे हाई वाटर लो वाटर, टाइड का क्वेश्चन भी है कि हाँ भी बॉम्बे का टाइड निकालिए। तो बॉम्बे में जब स्प्रिंग टाइड्स हो जाते हैं, व्हेन द स्प्रिंग टाइड्स टेक प्लेस, सो स्प्रिंग टाइड्स मीन्स टाइड का जो लेवल है बहुत टाइडल वाटर बहुत ज़्यादा उठता है, 5 to 6 मीटर। सो बाहर पानी समुंदर में वाटर इज ऑलरेडी 5-6 मीटर्स हाई, तो लैंड का पानी कहाँ से जाएगा, बिकॉज बाहर का लेवल ही ज़्यादा है। सो यस सर दैट इज द रीज़न। एक तो ऊपर से हैवी रेन, एंड बाहर जब जो पूरा शहर का पानी जो ड्रेन होना है, जो सी में जाना है, वो बाहर सी लेवल ऊपर। सो नेचुरली जब तक ये लो टाइड नहीं होगा, जब तक टाइड नीचे नहीं जाएगा, तब तक ये पानी ड्रेन ही नहीं हो सकता। तो यू विल फाइंड कि आपकी रोड्स, हाउसेस, एवरीथिंग इज फुल ऑफ वाटर। एंड ये वर्स्ट कब होगा, व्हेन देयर इज अ स्प्रिंग टाइड, मैक्सिमम टाइड, फुल मून हो गया और उस दिन अगर ज़ोर से बारिश हुई तो सबके घर में पानी भी जाएगा। सो कोस्टल एरिया में रहने का फ़ायदा भी है, नुकसान भी है, इज़न्ट इट? सो आपको अपने घर भी उसी तरह से बनाने हैं। सो इसके लिए फर्स्ट फ्लोर तो डेंजरस नहीं। सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाय हाउस, सो प्लीज़ डू नॉट बाय ऑन फर्स्ट फ्लोर इन बॉम्बे, नो, कि सर सेकंड या थर्ड फ्लोर ठीक है, ताकि फ्लडिंग तो ना हो, नहीं तो आपका सारा सामान खराब हो जाएगा। Okay, so this is how which is southwest monsoon takes place, and same thing is the opposite is the northeast. Now northeast monsoon में क्या है? Now this is again the sort of your isobaric pattern. Winters, now winter में जो land है it starts getting cooled. So ये सारा का सारा एशियन मास जो है ठंडा हो जाता है। So जब cold होगा, so all the air which is becoming, जब land ठंडी होगी तो हवा भी ठंडी हो जाएगी, all this air starts sinking down below. So basically high pressure is created. सो विंटर्स में हाउ द हाई प्रेशर इज क्रिएटेड, बिकॉज लैंड ठंडी है तो उसके साथ जो एयर इन कॉन्टैक्ट है वो भी ठंडी होगी। जब एयर ठंडी होगी तो इट स्टार्ट सिंकिंग बैक, इट डज नॉट स्टार्ट राइजिंग। सो इसके लिए ये आपका हाई प्रेशर क्रिएट हो गया। यहाँ पे हाई प्रेशर है एंड यहाँ पे आपका सी सरफेस जो है वैसे ही वार्म है, तो यहाँ पे एज कम्पेयर टू दिस द प्रेशर इज 1016-20। सो इसके लिए नेचुरली वही प्रेशर ग्रेडियंट, विंड स्टार्ट ब्लोइंग फ्रॉम दिस हाई प्रेशर टुवर्ड्स लो प्रेशर। सो इनकी डायरेक्शन बेसिकली इज नॉर्थ ईस्ट। तो ये विंड जो हाई प्रेशर से टुवर्ड्स लो प्रेशर आ रहे हैं, सो दे आर ब्लोइंग टुवर्ड्स दिस कोस्टल एरियाज, इंडिया, बे ऑफ बंगाल, साउथ चाइना सी। एंड इसमें थोड़ा सा और है कि आपकी नॉर्थ ईस्ट का भी डायरेक्शन यही है, तो ये थोड़ा सा एम्पलीफाई हो जाता है। सो नॉर्थ ईस्ट इज लिटिल स्ट्रॉन्गर, ज़्यादा बारिश भी करती है साउथ चाइना सी में, बे ऑफ बंगाल। So these is basically your monsoon regime of the Indian Ocean. अफ्रीका साइड जहाँ पे भी लैंड मास आया वहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होगी, एक्सट्रीम हीटिंग, एक्सट्रीम कूलिंग। चलो ठीक है, ऑल राइट। यस सर चलो तो ये बच्चे पढ़ लेना, आई सेंड यू दीज नोट्स ऑल्सो। वैसे तो बुक में भी है, सुब्रत साहब की बुक में अच्छा लिखा है। सो आइडिया इज समझने के लिए वेर एवर यू कैन अंडरस्टैंड नोट्स, जो भी आपको शॉर्ट अच्छे लगते हैं। वैसे तो इफ़ यू अंडरस्टैंड यू कैन राइट इन योर ओन लैंग्वेज, आप समझा सकते हो कैसे भी लिखो। सो प्लीज़ स्टार्ट प्रिपेयरिंग, मटेरियल इकट्ठा कीजिए, नोट्स बनाने शुरू कीजिए, चाहे बुक से, चाहे मेरे नोट्स से, कहीं से भी, जो भी आपको अच्छा लगता है। सो लिखने से एक तो नोट्स बन जाते हैं और थोड़ा सा याद भी हो जाता है। सो लास्ट मिनट में प्रॉब्लम नहीं आती कि आप क्या करें क्या ना करें। तो आप थोड़ा सा सीरियस हो जाइए। ऑलमोस्ट आपका मई, जून, जुलाई, जून एंड जुलाई, ओनली 2 months आर लेफ्ट, इजंट इट? सो अब अपनी बुक्स थोड़ी सीरियसली खोलिए और थोड़ा ज़्यादा टाइम डिवेट कीजिए। ओके, चलो आज के लिए इतना ही है। एनीथिंग फ्रॉम योर साइड? नो सर। चलो ठीक है, तो पढ़ लीजिए। सो नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद द वेदर कोडिंग, मेट का